Namaste. I welcome everybody to the 11th VCM on Miraculous Result of Being Grateful and Annual Compliance under Companies Act 2013. The VCM is organized by Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory of ICAI, headed by Chairman CA Dr. Rajkumar Adukia, who is also the Chairman of CP Committee and Convener of Publication and CDS Directorate, with CA Hansraj Chok as Vice Chairman and Chairman Committee for MPS and Committee on Career Counseling. So this is the initiative of the Chairman, Shri CA Dr. Rajkumar Adukia, where we have these webinars on Fridays so that the participants, the members can benefit from the inputs over here. And we have got two renowned faculties, the personalities who have come down to speak to us. So here first we have Ms. Ruchi Pahuja, followed by at 5 o'clock with CS Divesh Goyal. So a short profile about what Ruchi Pahuja madam is into and what I see. So Ruchi Pahuja, an educator by profession, loves helping people become the best versions of themselves and equips all her students with the tools they need to achieve their goals. Her teaching journey began in Singapore, where she specialized in teaching English and was certified by the British Council. After moving to India, she has been associated with many schools and has spent a better part of her last 2 decades with Central Public School in Udaipur, Rajasthan, in capacity of a school coordinator as well as high school English teacher. In addition to teaching, Ruchi has a deep interest in alternative healing and has been certified in multiple healing modalities over the year. Ruchi's experience lies in touch healing therapies like Reiki and Access bars, which focus on using energy from the universe and using it to heal, protect, and promote positivity in the recipient's life. She is also a certified Access facelift practitioner. Other than being a Reiki practitioner and an Access bars facilitator, Ruchi also specializes in batch flower remedies, a practice derived from homeopathy that focuses on regulating one's emotions by using the nectar of the select batch of flowers. That's really great, man. Ruchi is of the opinion that learning is a lifelong process, and she is constantly on the lookout for her next big adventure. In 2021, she became a certified remedial coach and has been focusing on teaching students who struggle with various learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, ADHD, etc. Gratitude is one of Ruchi's core beliefs, and she holds regular book readings and gratitude classes for people of all age groups and backgrounds. Her goal is to equip all her students with the key spiritual skills of gratitude and manifestation so they can all create their best possible lives and realities. Being a teacher and an alternative healer, she feels that learning and spirituality go hand in hand, and her classes are a constant reminder of how spiritual practices make learning easier and better. So I'll quote the last line again. How spiritual practices make learning easier and better. So from here to Ruchi Pahuja, ma'am, we welcome you and we ask you to take the session from here and enlighten us with the knowledge that you have. Please. Thank you so much. Thank you so much, Salim sir. A very warm good evening to all ladies and gentlemen present here. I'm so happy and honored to address such distinguished audience today. My name is Ruchi Pahuja. Let me share the screen once again. Yeah. Yeah. My name is Ruchi Pahuja, and I've been teaching, as we all know now, I've been teaching from last 15 years English to students and adults. And yes, I enjoy doing this touch healing modalities along with teaching LD students. And the best part is I really love empowering people to embrace gratitude and help them attract magic and miracles in their life. That is what I enjoy the most. To begin with, I would like to offer my sincere and heartfelt gratitude to ICAI. Also, CA
Rajkumarji Adukia, and CA Hansrajji Chuk, along with all the committee members, for giving me this opportunity to be with the members of one of the prestigious institutions of India. I thank you so much, all of you, for giving me this opportunity. So friends, before we move further, we all are learned people, and learned people always love to analyze and assess. So I would request all of you to keep that mind aside and just be in flow what we see and hear, putting all our barriers down and giving me an open heart so that we can hear what really the gratitude is. Dear friends, if this logical mind was capable of solving everything, we would not be facing challenges and limitations. So, and also, I request all of you to keep paper and pen with you so that you can participate in the activities I have to know ourselves better, how much we know about ourselves. Dear friends, life is full of choices. Hence, it is your choice to come along with me on this journey of gratitude and bring magic and miracles in your life. Before that, I would like to share one story. Since I can go bilingual, I would love to share the story in Hindi. कुछ लोग एक नाव में जा रहे थे. अब सब नाव रास्ते में टूट गई, सब लोग बह गए. उस नाव में एक अकेला आदमी बचा. अब उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. भगवान जी ने एक नाव भेजी. वो नाव उनके समीप पहुंची तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो इस नाव में नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान जी का वेट कर रहा हूं, मैं तो उनके साथ ही जाऊं. ठीक है साहब. थोड़ी देर में दूसरी नाव आई. उसको भी यही जवाब मिला कि मैं तो नाव में नहीं बैठूंगा आपकी, मुझे तो लेने आएंगे भगवान जी और मैं उनके साथ आऊंगा. अंततः हुआ क्या? वो आदमी डूब गया. जब वो स्वर्ग में भगवान जी के पास गया तो उन्होंने भगवान जी को उलाहना दिया, मैंने आपको कितना बड़ा भक्त हूं मैं आपका, मैंने आपसे कहा कि मुझे प्लीज बचा लो, आपने तो मुझे बचाया नहीं. तो भगवान जी ने कहा, तो वो जो 2 बार नाव आई थी वो किसने भेजी थी? So dear friends, we have choices. So it really is on us whether we avail those choices or not. Also, as you all know, I am a teacher at heart. So I have one question for all of you. I can see in chat. I would love to see the answers in chat also. Okay. What if we didn't take good things in our life for granted? I repeat my question. What if we didn't take good things for granted? Can anybody write what would happen if we would not take good things for granted? Then you'll have to give a few seconds. The moment. Okay. Reply. Fine, sir. So I have to wait. पार्थ जी वहां से प्लीज पेस्ट करिए. 2-4 रिप्लाईज भी आप कर सकते हैं जो इमीडिएटली आते हैं. प्लीज डू दैट. चलें, जब तक आगे चलते हैं सर. We'll wait for the answers. Ma'am, the replies have not come. So, assuming what would be the answer? Sir, if we all would not take things for granted, the life would be full of roses. Oh, fantastic. We have so many things to count upon, but we don't consider them important enough or to appreciate them. Well, let us talk about what is gratitude. Gratitude is a feeling and emotion of thankfulness. Thankfulness. What is thankfulness? Again, I'll give you one example, because if I ask anybody, do you say thank you? You all would say yes. We all say thank you. Okay, let me give you one example. Suppose if you're walking on a road and you're very thirsty. Imagine there are no bottles. So now you're very thirsty. So you see a dhaba nearby, then you get a glass of water and you're so happy to get that water and you say,
Thank you so much. Okay. You're walking further with your earphones and enjoying the music. And then you did not see that there is one big truck coming, which would go upon you and crush you rather. And somebody pulls you away and saves you. You would again say thank you. But what would be the difference between the two thank yous? I think you can very well imagine. This second thank you would be a lot of emotions, a lot of feelings. So that is what thankfulness we require when we have gratitude, not mere words, but feelings. So what exactly, it is possible that you may not have everything what you want, but then still we have it. So we can be very thankful for that. For noticing the simple pleasures in life. Since, sir, I cannot see many people, can I ask Salim, sir, from you also? Can you tell me one simple thing which you must have noticed, a simple pleasure since morning, if you have noticed in your life? Noticing. So I was in Delhi and the flight landed on time. That was a So, very happy moment for me because so then that was a good pleasure. That's a pleasure, right? exactly that, right? And you should be very grateful for that. Okay, I reached on time. This is what we fail to notice such small pleasures in life. What do we wait? We wait for big things to be happy and then feel the gratitude. We have to notice simple things, a plain, simple phone call from a friend from after a very long time, a good nashta at home, a good movie you saw. Anything can be like that, right? Next one is appreciating everything you receive. If you sit down to find out, you will see that we receive so many things every day. But we forget to appreciate why. We take things for granted. For us, like कभी अपन किसी नेता को बोलते थे, आजादी मेरा बर्थ राइट है. हम ह्यूमंस बोलते हैं, दुनिया की सारी अच्छी चीजें हमारा बर्थ राइट है. चाहे we appreciate them or we don't. Right? So this is what it is. A state of gratefulness. Recognizing that life owes nothing. भगवान ने जिंदगी दी है, बहुत खूबसूरत सी. Right? एक बहुत खूबसूरत चीज है इसमें. Counting your blessings. आप में से किसी को कुछ चैट कर सकता है मेरे साथ? What do you mean by this count your blessings? कोई मुझे बता सकता है? What do you mean by count your blessings? I would say something on this. Yeah. You should look at the smaller things as you suggested that are around you. You should Yeah. also believe in the natural force. Uh-huh. Like there's a small story which says, which I have also read in school, Yeah. that a king cut his finger and he was angry with his wazir, and then he put him in the jail. But when he went for the hunting, and because of that finger on which there was a cut, the dried blood was sniffed by the tiger and he got saved. And he felt bad for the wazir who was in the prison. So, Uh-huh. as he said, had I been there, I would have been the prey today. So, these are very small things, a small cut Yes. on a hand. So this is what. Yes, sir. Very true. So count your blessings means what? We count our problems. I have this problem. I have that problem. We never count our blessings. What do you mean by that? It means to make an effort to appreciate what are good things in our life, right? I'll ask you one more question here. When was that last time you stopped to think about what are you grateful for? What are certain good things in my life where I should be grateful for them? When was that? I think all of us are in the same boat. We hardly do that. My dear friends, as I've suggested, please keep a pen and a paper. This way you will really analyze yourself, how much you appreciate about your own life, or how much we appreciate about our own life. See, this is one activity, count your blessings. And I give you 5 minutes. What do I mean by that? For example, if I have to count about it, I would say I've got a very good family, supportive family, beautiful house, healthy body. इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे तो आप सोचिए आप क्या लिख सकते हैं. मैं सजेस्ट करूंगी आप सिर्फ नंबर लिखिए और एब्रीविएशंस में लिखिए, क्यों आप ही अपने लिए लिख रहे हैं.
आप देखिए 5 मिनट में कितनी चीजें याद आती हैं. हम में से शायद कुछ लोग तो सोचेंगे क्या लिखूं, what do I count, what are my blessings. So I really want you to write, my dear friends, and see how much we appreciate and notice what is good in our life. I give you a few minutes to do that. It can be anything about health, relationship, career, job, friends, neighbors, your own life. मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत healthy हूँ. You can write. मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत successful हैं. आप नंबर डालिए और एब्रीविएशन डालिए. मुझे सिर्फ नंबर पता करना है कि आप लोग कितना लिख पा रहे हैं और कितना लिखा 5 मिनट में आप लोगों ने. I'm really interested in that. I don't want you to tell me what are you writing. I just want how many things you have written, and be true to yourself. Nobody's going to check it. Count your blessings. What is good in my life? I have a good job. There are people who don't have a job. I have an office where people don't have. I have good neighbors. There are people who don't have anybody to talk to. So yes, I would love if I see some numbers in the chat. I think Mr. Path is going to help me with that. Any number. I'm sure people must have written something. Ma'am, if you talk about me, I have got a year 12, 13, 14 numbers. But Wonderful, sir. Initially, when I started writing, I was fast. After the 8th number, I had to think. Yes. Ab kya hai? Ab kya hai? Ab kya hai? Yes. First 8 were okay. But then the remaining 7, I had to think. I had to ponder over it. And then, I could write it down. Yes. Sir, if I get some numbers in chat, I would love, you'll be surprised. All of us, get stuck at some point. क्या है मेरे पास? और जब आप शांति से बैठोगे और लिखने बैठोगे, तो मेरे ख्याल से 200 चीजें तो कहीं नहीं गई है. How many people have written? Can anybody tell me, or should I continue further? Because I don't see any number here. Ma'am, I would suggest you continue. Yes, sir. So, dear friends, if you cannot write now, please do this exercise at home and analyze yourself. Okay, great. One second. Okay, we all know what is law of attraction. We keep talking, we keep hearing, right? The law of attraction, I'm sure you all know about it. It is whatever we think, whatever we feel inside, that is what we attract more in our life. This is law of attraction. We are not talking about magnetism. We are talking about universe. So whatever we feel and think, that is what we attract. If we feel good, we send the signals of that goodness and attract more. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास बहुत सारी शिकायतें हैं, घर में, बाहर, बच्चों से, सबऑर्डिनेट से, तो आपके पास क्या आएगा? शिकायतें. अट्रैक्शन है ये. और यदि मेरे पास बहुत छोटी छोटी खुशियां हैं और मैं खुश हो रही हूँ, तो मैं अट्रैक्ट क्या करूंगी? और भी छोटी छोटी खुशियां. ये बहुत सिंपल से फैक्ट्स है लाइफ के. आप करके देखिएगा. आप विश्वास मत करिए, करके देखिए. ना अच्छा लगेगा, बंद कर दीजिएगा. But you will get the result. याद रखें. Dear friends, this world is a mirror. Whatever you will give, it will come back to you. So therefore, this gratitude is also what? A magnet. A magnet, एक चुंबक, जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा सभी कुछ. आप कह लीजिए हर चमत्कार, धन, वैभव, स्वास्थ्य, relationship, खूबसूरत रिश्ते, everything would be attracted. Try doing it. If you don't feel it, बंद कर दीजिएगा. Believe me, friends, do it and taste the fruit of this gratitude. Please do it. The law of attraction. आपने कभी सोचा है किसी दिन आपके पास खूब भर भर की परेशानी आती है, and we feel आज का दिन तो बहुत भारी था,
That is what we are. That is what we have been sending, and we are getting it in return. Law of attraction, right? Okay. I want you to read these lines and not to forget them. Please don't. No threatening. डराने रही हूं. आप देखिएगा. Whoever has gratitude will be given more and will have an abundance. Whoever does not have gratitude risks losing whatever they have. ये लाइंस को कहीं पर लिख के रखें और हमेशा देखते रहें. आप देखिए, चेंजेस देखिएगा आप लोग खुद से. Right? What do we want from our life and universe? क्या चाहिए मुझे मेरी लाइफ से, मेरे यूनिवर्स से मुझे क्या चाहिए? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, ask and you shall receive. That means I should know what do I want in my life. For example, किसी ने मुझसे कहा कैसी जिंदगी चाहिए? मुझे तो अच्छी चाहिए. अब अच्छी तो किसी के लिए 5 स्टार होटल में वाली हो सकती है, किसी के लिए 2 रूम का बंगला भी, घर भी और फ्लैट भी हो सकता है. अच्छी का क्या मतलब है? कोई कहेगा मुझे बहुत अच्छा काम चाहिए, तो काम तो एक बंदा ठेला चला रहा है वो बहुत खुश है उस काम में, वो भी एक काम है. और एक कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ है, वो भी काम है. आपको क्या चाहिए? My dear ones, we say we want good life. What does that mean? We have to be very specific. एक वाक्य याद आ रहा है मुझे. हम सब मदर्स, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं हम बहुत ध्यान देते हैं. सपोज एक बहुत ही छोटा बच्चा है, तो यदि वो सो रहा है तो 10 बार देखने जाएंगे. बट जब तक वो रोएगा नहीं, उसके पास दूध की बोतल नहीं आने वाली है. वो रोएगा. That means unless and until that child would not ask, that child will not get that bottle of milk also. As simple as that. So we also have to be very specific. What do we want from our life? We have to be focused. So I have this activity also. If you're not able to do it now, I still would love if you can do it. What do you want from life? No, let me give you one example. You can be so specific and you will get it. For example, if you want, मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी चाहिए, इस शहर में चाहिए, इस तरह के सेक्टर में चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, इस तरह का माहौल चाहिए, इस तरह के फ्रेंड्स चाहिए. आप लिख के देखिए. My dear friends, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम सब लोगों ने 50-50 चीजें लिख रखी हैं, और जो चीज खत्म हो जाती है, आ जाती है हमारे पास, हम उसको टिक कर देते हैं और आज साथ में उसमें ऐड भी करते जाते हैं कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए. राइट? एक थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड के पास गई थी, उसके 2 बच्चे हैं. बोले एक जो बच्चा है ना मेरा, वो बड़ा डिमांडिंग है, उसको रोज टिफिन में नई नई चीज चाहिए, कभी क्या, तो मुझे रोज उसके लिए अलग अलग चीज बनाती हूँ. तो मैंने कहा फिर तो अच्छा है दोनों बच्चों के लिए. और ये जो दूसरा वाला ना, ये बोलते मम्मी कुछ भी दे दो. तो मेरे पास कभी अच्छा ज्यादा बन जाते हैं तो दोनों के लिए डाल देती हूँ. इन केस नहीं होता है तो फ्रिज में जो बचा हुआ होता है वो उसको मैं दे देती हूँ टिफिन में डाल के. अब देखिए आस्क का कितना फर्क है. यू आस्क एंड यू शैल रिसीव. These are very small things. Please be focused and write. You will love them. You will love doing this exercise. Since I'm not able to see many people doing it and getting the chat here, so please do it and you will enjoy that. Please let me know if you all can. What have you written? How many things have you written? Yes, sir. We have a chairman also over here, Yes, sir. chairman CECL NEA, CA Dr. Rajkumar Adukia sir, who is also there in the session. He just joined 10 minutes back, man. So he's there. Let's see whether he'll come down here and talk to us. And you can continue with the session. Any questions you can put across to me also, ma'am. I would be a part of the activity. Perfect, sir. Dr. Salim ji and Ruchi ji, I am at airport, but what I request Mr. Parth, and see my request of making it more interactive, more effective. Yes, sir. See, even if we are online, we can have many responses. Mr. Parth, you must develop that, some technique where we can have more responses and post in the chat box immediately. I would love to have them, sir. Yeah. So grateful, So sir. So Ruchi grateful. ji, you can keep on asking questions.
and that will give opportunity to members to think themselves in their mind. Sure, sir. Yeah. Thank I you will so do that. much. I am grateful to you for your session. So my pleasure, sir. Altogether So my this pleasure. I am doing a grateful practice. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. So Please carry on. Please carry yes, on. thank you so much, sir. So I would like Mr. Path to help me here. If you can give me some numbers here. What are people writing? What do they want? How many have they written? Again, my suggestion is write the number and abbreviation so that you write it fast. You see, I have seen people struggling here also. They don't know what do they want in life. सबका एक ही चीज होती है, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, तो उस अच्छे की डेफिनेशन सबकी अलग है. किसी को 10 कमरे का फ्लैट अच्छा है, किसी को 1 कमरे का फ्लैट अच्छा है, तो मेरा अच्छा क्या है? सो आई शुड बी वेरी क्लियर, मुझे यूनिवर्स से क्या चाहिए. देखिए साहब, ये यूनिवर्स तो भरा हुआ है. अब आप उस यूनिवर्स में से एक चम्मच लेके जाना चाहते हैं अपने लिए, आपकी चॉइस है. आप ड्रम लेके जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है. आप कटोरी लेके जाना चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ? सो इफ यू रियली वांट समथिंग, you will do this activity. This will give you an opportunity to really find out what you really want in your life. सलीम सर, जब तक तो आप तो लिख ही सकते हैं कुछ चीजें. I've already written it down what I want. As I did the first activity, and you know, you said it went right. And I've requested, please don't analyze anything. Just go with the flow. So we have in the chat box some replies over here, if you could check. I want a number. What do you want in your life? अभी भगवान आ जाए आपके पास और उन्होंने कहा आपसे कि आपको हर महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो चलो आज एक 10 लाख आज मिल गए, कहाँ यूज करना चाहते हैं? We should be so specific. हमें क्या चाहिए लाइफ से? कैसी नौकरी, कैसा घर, कैसा माहौल, कैसे फ्रेंड्स? आप लिख के तो देखिए, वो वैसा का वैसा होगा. अब देखिए, आप सब लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव इनफ मनी, सो दैट मीन्स यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ ना दे. I am very happy, very good. I have no health issues, wonderful. Life should be peaceful and healthy. ये एक बहुत, अब देखिए पीसफुल तो क्या, घर में झगड़ा नहीं होगा? उस झगड़े में कभी ग्रेटिट्यूड देखा? आज ज्यादातर जब अपन जोक्स पढ़ते हैं, ज्यादातर जब जोक्स पढ़ते हैं हम वाइफ्स के ऊपर डालते हैं. चलो, बीवी ने आपसे झगड़ा किया, मान लिया, उसमें क्या ग्रेटिट्यूड ढूंढा? बीवी है तभी तो झगड़ा करा. ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनकी बीवी नहीं है. आप उनसे पूछिए उनकी लाइफ कैसी है. Well, leave that apart. I really want you to do this activity. I'm not waiting for many because I think that this is the yeah. Chili, talking about benefits. We are humans. हम वो काम नहीं करते जिसमें फायदा नहीं होता है. We look for फायदा first. So what are the benefits of being grateful? देखिए साहब, यहाँ मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, you cannot. अभी जैसे सलीम सर ने मेरे साथ शेयर किया कि आप जब वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपको पता लग रहा है कि हाँ मैंने इतने लिखे, वरना तो अपन जब एक्टिविटी का नाम दिखता है, बहुत सिंपल है, we can all do it, but it is not that. Makes us happier. कोई मुझे बता सकता है कि when you are grateful, आपके अंदर कैसी वाली फीलिंग्स होती है? बहुत अच्छी पीसफुल फीलिंग होती है, and you feel very happy. Why? Because you are busy appreciating, you are grateful, hence no feeling of depression. क्योंकि देखिए, एक कहावत है कि प्यार और कंप्लेन साथ में नहीं रह सकते. आपको यदि किसी से प्यार है तो आपको कंप्लेन नहीं होंगी, और कंप्लेन्स है तो आपके पास प्यार नहीं होगा उस चीज का. तो ऐसे ही जहां पर ग्रैटिट्यूड होगा, वहां पर डिप्रेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास नेगेटिव इमोशंस ही नहीं आ रहे हैं,
आप देखिए भगवान ने हम सबको एक अच्छी सी घड़ी दी है. घड़ी क्या बोलूं, एक ऐसा ऐसा kind of a meter. God has given us a meter. What do I mean by that? जब आप कोई बहुत अच्छी चीज करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैसी वाली फीलिंग्स आती हैं? अच्छी वाली. यू फील हैप्पी अबाउट इट. देयर इज पीस इनसाइड. और यदि आज मैंने किसी की चुगली करी अपने बॉस से, मेरे दिन भर मेरे अंदर क्या चलता रहेगा? अच्छा वाला तो नहीं चलेगा. तो ये हमारे अंदर वो मीटर है जो चेक करके बता रहा है कि मैंने गलत करा. तो जब हम ग्रेटफुलनेस में होंगे, व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, वी डोंट थिंक अबाउट डिप्रेशन, एंजाइटी, बिकॉज वो वाले नेगेटिव इमोशंस होते ही नहीं है. So when there are no negative emotions, what will be there? Happiness. Definitely when there is no negative emotion, it will reduce your stress, because gratitude regulates our emotions. और राजकुमार जी सर ने एक बात कही थी कि हम लोग इमोशनल बैलेंस मिलता है हमको. मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आई थी कि जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हमारे पास इमोशनल बैलेंस आ जाता है. हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हमारी पढ़ने से हमारे पास इमोशनल बैलेंस हो कोई जरूरी नहीं है. उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है. सो व्हेन वी आर इन ग्रैटिट्यूड, व्हाट आर वी आर मैनेजिंग आवर स्ट्रेस. अभी थोड़े दिन पहले, कल या परसों ही, इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट हो रहा था. क्यों हो रहा है ये हाइपरटेंशन? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे को लाइफ में ग्रैटिट्यूड ही नहीं है. कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि क्या क्या अच्छा है मेरी लाइफ में. कभी नहीं सोचा. ये दौड़ है कि मेरे पास क्या नहीं है. राइट? So you will be surprised to know that reports, they show that gratitude, it would keep your heart calm. Heart is calm means what? ये घड़ी के अंदर भी एक वो है, मीटर है, जो बता रहा है मेरा हार्ट कैसा है. which is so important. Helps us sleep better. आप देखिए, जिस दिन आप रात को सोने जाएंगे और आपके दिमाग में खुशियां ही खुशियां, मैंने ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं है, तो आपकी नींद कैसी होगी साहब? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी नींद होगी, बहुत खुशी होगी, स्ट्रेस नहीं होगी. तो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी? माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया. राइट और नॉट? इंप्रूव्स सेल्फ एस्टीम. वो कैसे होता है भाई? देखिए साहब, यदि मैंने ये सीख लिया कि मुझे दूसरों की चीजों में भी अप्रिशिएट करना आना चाहिए, और मैंने जब दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखा, तो क्या हो गया? मैंने अपने आप को से कंपेयर ही नहीं करा. प्रॉब्लम कहाँ है? जब मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रही हूँ, और जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे अंदर स्ट्रेस आ रही है, नहीं यार उसका ये ज्यादा अच्छा है, मेरे पास ये अच्छा है, और लाइफ उसी में चली जा रही है, ये दौड़ ऐसी वाली. So therefore it improves your self esteem because there is no comparison, no self esteem. हाँ, कभी अपना लो सेल्फ एस्टीम हो ना, तो अपनी ये लिस्ट निकाल के पढ़ लीजिएगा. यू विल बी सरप्राइज्ड. आपको लगेगा ही नहीं कि मैं उस फीलिंग में वापस जा सकता हूँ. Enhances relationships and friendships. All my friends here, all the male chartered accountants, आपसे एक क्वेश्चन है. आपने अपने पार्टनर को कब ग्रैटिट्यूड दिया था लास्ट? अभी मैं पूछूंगी अपने पार्टनर को कब बताया था कि ये अच्छा नहीं था और ये अच्छा था. वो तो रोज होता है, फॉर एग्जाम्पल. पर लास्ट हमने कब बोला? सलीम सर भी चले गए. लास्ट हमने कब बोला अपने पार्टनर को कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू? मुझे मत जवाब दीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा. माय डियर फ्रेंड्स, if you are in gratitude, do you think so your relationships will be better? आपके घर में दूसरे लोग हैं, हम क्या देखते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. But if we are in gratitude, naturally the relationships will be better. Friendships, हम सब किस फ्रेंड को ढूंढते हैं? हम उस फ्रेंड को ढूंढते हैं, उस फ्रेंड को हम ढूंढते हैं जो ग्रैटिट्यूड देता है, हमारी बात सुनता है एम्पैथी के साथ, हमारी बात सुनता है, हंसता नहीं है, तो हम उस फ्रेंड के पास जाना पसंद करते हैं. एक तो बहुत ही खूबसूरत है, इट मेक्स यू अ बेटर मैनेजर. Why? Because एक तो चीज है, gratitude will always reduce your aggression. Believe me friends, additional empathy and gratitude will help you manage your things very well. Because why?
because it is an ability to praise others, to to motivate others, to guide others. अभी यदि मुझे सिर्फ फॉल्ट ही देखना होगा तो डू यू थिंक सो उसमें कुछ ग्रेटिट्यूड आने वाला है? ना, बिल्कुल भी नहीं. So it will help you make better manager and we will find better meaning in our life. Why? क्योंकि जब हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, जब हमारे जॉब में मुझे पसंद है. अब मेजॉरिटी से पूछो, बड़ी गंदी नौकरी है यार, सरते हम तो जब उस नौकरी के लिए जरा भी ग्रेटिट्यूड नहीं है तो वो नौकरी मुझे क्या देगी साहब? जो मैं दे रही हूं वो मुझे वापस देगी. ये दुनिया क्या है? मिरर है. आप जो देंगे वो आपके पास आएगा. तो जब आप नौकरी को 10 गाली देंगे तो नौकरी भी आपको ही गाली देगी. एज सिंपल एज दैट. तो फिर व्हाई नॉट फॉलो ग्रेटिट्यूड? और इतने सारे एरियाज है मेरी लाइफ के जो मैं बहुत खूबसूरत कर सकते हूँ. अब कोई मुझसे पूछेगा, मैम इतना तो ग्रेटिट्यूड पे भाषण तो बहुत हो गया, करना कैसे है मुझे? तो साहब बहुत सिंपल है. डोंट लुक एट द पॉइंट्स, डोंट लुक एट पीपल्स फॉल्ट. आपने सुना होगा मक्खी के बारे में. आप एक रूम में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रख दीजिए और एक गार्बेज का टिन भी रख दीजिए वहां पे, अ डस्टबिन फुल ऑफ मस्त वाला गार्बेज. मक्खी सब कुछ छोड़ के कहाँ जाएगी? उस गार्बेज पे. हमें क्या है, हम भी क्या होना चाहते हैं? चॉइस है हमारी. वी हैव अ चॉइस. डू वी वांट टू बी दैट मक्खी जो सब कुछ अच्छा छोड़ के उस गार्बेज पे बैठना चाहती है, कि वी वांट टू लुक एट एंड अप्रिशिएट पीपल, नॉट ओनली टू बी अ मशीन टू फाइंड फॉल्ट्स. You didn't do this, you didn't do that, right? What do we want? It is again our choice. हम सब ने काफी जिंदगी जी है. कम से कम मेरी एज के लोगों ने तो काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया लाइफ में. चैलेंजेस भी आए. अब उन चैलेंजेस को आप सोचिए, जो चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, क्या वो कुछ आपको देके गए कि सिर्फ दुखी करके गए? Challenges have made you a very strong person. The challenges have made you realize life has many beautiful things to offer, right? So क्या challenges खत्म हो जाएंगे हमारी लाइफ में? ना. क्या challenges सबकी लाइफ में नहीं है? तो क्या हम challenges के बगैर रहेंगे? आएंगे challenges. तो करना क्या है? Find gratitude. अब आप तो ये वाली बात कह रहे हो, मैडम पेट में खाना तो गया नहीं और आप बोल रहे हो सोचो पेट भरा हुआ है. मैं ऐसा नहीं कह रही. मैं कह रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल आज का एक मेरे बहुत पर्सनल हुआ था आज, वो मेरे दिमाग में आ रहा है. एक पार्टी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मुझे पैसे कहीं डालने थे, तो मेरे पास जेब में पैसे थे. अब चैलेंज है ना मेरे पास ये कि मुझे कहीं पैसे डालने और वो पार्टी मुझे पैसे नहीं दे रही है. तो फिर मैं क्या करूं? तो अब ग्रेटिट्यूड कहां से लाऊं? तो अब आप उस फीलिंग में रहें जो आपको दुखी करे, जो आपकी सारी मिरेकल्स को, सारे मैजिक को बंद कर दे. चॉइस है आपके पास. या तो आप उस नेगेटिव फीलिंग में रहिए, या तो आप एक शुक्राना दे दीजिए यूनिवर्स को. थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एटलीस्ट आई हैव दिस मनी, आई एम सो ग्रेटफुल टू मनी दैट आई हैव इट, और मैं ये काम कर सकती हूँ. अगेन चॉइस है अपने पास. व्हाट डू यू वांट टू डू इट, राइट? सो अगेन, what do I want to look at? That is again my choice. The next point is practice mindfulness. यहाँ पर एक ट्रिक है साहब. ट्रिक क्या है? Visualize and be in gratitude for all the grateful things in your life. उससे क्या होगा? जब आप grateful रहेंगे, when you are in gratitude, what would happen? You will be very happy. And as I've told you, this is law of attraction. The more you are happy, the more grateful, more things will come to you. You will be grateful for those things. आपने लास्ट टाइम वॉलंटियर कब किया था? कहीं वॉलंटियर कब किया था? अपन जब बड़े हो रहे थे तब हम सब सुन के बड़े हुए कि whatever society is given, give it back to you, maybe in small fraction. So when we volunteer, what happens? जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक यूनिवर्स हमें सिखाता है. हम we learn to appreciate what we have. We learn to acknowledge कि I have so many things which others don't have. तभी तो मैं उनको दे रहा हूँ.
तो जब आप लोगों को ये चीज जब वॉलंटियर करते हैं और आपको पता चलता है और आप अप्रिशिएट कर पाते हो, तो उससे क्या होता है, you learn to notice those small things, small pleasures of your life. जो मैंने स्टार्ट किया था, नोटिस स्मॉल प्लेजर्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जब आप वॉलंटियर करते हैं, यू लर्न टू नोटिस दोस प्लेजर्स कि मेरे पास ये सब कुछ है, right? And as a result, what would happen when you are again in gratitude? You will get it more. ये इस मामले, express yourself. हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, पर एक्सप्रेस करने में बड़े कंजूसी करते हैं. मतलब यदि मिस्टर सलीम ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड एक्सप्रेस, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर फॉर गिविंग मी दैट सपोर्ट. आपके साथ बात करके तो मैं बिल्कुल पीसफुल हो गई थी. थोड़ा सा था मेरे अंदर कि मैं कैसे करूंगी, बट व्हेन आई हैड फ्यू वर्ड्स विथ यू, आई वाज सो कंफर्टेबल. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर. अब ये चीज मैंने एक्सप्रेस नहीं करी और मैंने घर में सबको बोला. वो मिस्टर सलीम थे ना, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया. अब जब मैंने मिस्टर सलीम को ये शेयर किया, मिस्टर सलीम को भी बहुत अच्छा लगा और उनसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा. तो हम दोनों के पास क्या आई? खुशी आई ना. बट हम उसका उल्टा करते हैं, हमको लगता है वो ज्यादा चढ़ जाएगा. नहीं बोलना चाहिए. नो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. Whatever you will give, you will get it back, right? So please, and do that. Make your day bright and make others' day as well. Sir, what is the time? Please help me. I've got a lot of time. Devesh sir, आप मेरे को डरा रहे हो. Good evening, ma'am. नहीं डरा नहीं रहा, I was just joining it. Sorry for disturbance. Spend time with your loved ones. How many of us enjoy spending time with loved ones? सलीम सर, क्या महसूस होता है जब आप अपना टाइम अपने loved ones के साथ बिताते हैं? तो Then you really feel great and fantastic, because what has happened since I'm in millennial and I've seen this transformation. We had this habit, on weekends. I've studied from a convent, so Thursdays and Sundays were a day off. So we used to anxiously wait for it. yeah. And parents, because they were the only source of getting things. So I want that to be passed on to my kids, and that's the feel really great of spending time with family. Yes. My last point is improve happiness. How? Other ways of life. When you exercise, when you enjoy your hobbies, what happens? Your happiness hormones, they increase. When happiness increases, you automatically become grateful. When you are grateful, you become happy. When you're happy, you become grateful. So this is how simple things are. Man, one more thing, when I talked, Yes, sir. when I answered about spend time with loved ones, Yes, sir. these loved ones have changed. First it was friends, then it was, when I got engaged, it was my spouse, to be spouse, then it was spouse. Now it is kids. When I was too young, it was parents. So, even this is there, like the loved ones, they also keep on changing as you grow. And I'm sure tomorrow my grandchildren would be the loved ones. My kids would be placed by them. So the change is inevitable. And the change is the spice of life, sir. This is very important, I feel all of us should know about this. How to cultivate gratitude at work. And I would love you to all read this. Salim said, if you don't mind, can you read for them loud enough so they all can hear? So how to cultivate gratitude at work? Food for thought. Why should anyone thank you just for doing your job? If I am working somewhere, why should somebody say thank you? Right? This is what we feel. And another one is, why should you thank your co-workers for doing what they are being paid to do? We'll talk about it. You will know. You see, gratitude at work, what happens? Generally the leaders, they have this fear. See, if I will be the one to share gratitude, my team will feel that I'm a very emotional person. I am a weak person. Or they will take me for granted. The leaders have this fear that it will be considered my weakness that I'm saying thank you to them. Or I am not considered emotionally strong. My employees will feel that, or my employees will, they would expect some recognition or entitlement. Believe me, dear friends,
There are enough researches and studies to show you that everybody likes what kind of bosses. A boss who knows how to say thank you, a boss who knows how to appreciate. Again, this is my opinion. Can't differ. So, yes, the thing is here, you should be authentic. For example, if I am a leader and I am going to appreciate or say thank you to somebody, I should be genuine and authentic. Like, why am I saying thank you? I should have a reason for saying that thank you. It is not to please somebody. So there it is authentic. And of course, it will help you a lot. Start at the top. कहा जाता है जैसा बॉस होता है, जैसा मालिक होता है, वैसा घर होता है. Right? So, but उसके अलावा जब मालिक बहुत अच्छा होता है, अच्छा अलग अलग डेफिनेशन है, मैं उसके डीप में नहीं जा रही. तो when what do employees appreciate? They appreciate that they get thank you. Or what can, so for this, what can we do? What we can do is when we have meetings, the end of meetings, 5 minutes before any meeting, we can just have that 5 minutes to say thank you to each other. Not only the bosses, everybody who can say, do you think so? What will happen because of this? What kind of environment you will have in the office? You are preparing your people to be strong in the case of some failure, in case of some conflict or some change, right? Thank those who are not thanked. हमारे ऑफिस में कॉफी पिलाने वाले हैं, peons हैं. We have never thanked them. Just for once, tomorrow you go and say thank you to them and just look at the shining in their eyes. You will feel very happy. Plan a gratitude bulletin board or a gratitude wall. For example, I have a big office. और मेरे पास एक नया एम्प्लॉय आया और उस एम्प्लॉय को बहुत अच्छा वेलकम करते हैं हम लोग. हमारी ये परंपरा है, हम बहुत अच्छा वेलकम करते हैं. अब वो एम्प्लॉय ने देखा कि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड वॉल है या बुलेटिन बोर्ड है, ग्रैटिट्यूड बुलेटिन बोर्ड है, तो उसने लिखा, आई एम सो थैंकफुल फॉर द वार्म वेलकम इन दिस न्यू ऑफिस. आप सब लोग गदगद फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, राइट? यदि मुझे किसी ने बहुत अच्छा कॉफी का कप दिया जब मुझे बहुत जरूरत थी, मेरे बगैर बोले मुझे किसी ने कॉफी का कप दिया और मैंने उसको वहां लिख दिया, थैंक यू सो मच मिस्टर सलीम फॉर दैट कप ऑफ कॉफी, आई रियली नीडेड दैट. मुझे कैसा लगेगा और मिस्टर सलीम को कैसा लगेगा और ऑफिस में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा. जस्ट इमेजिन, your workplace will be very different. It looks very simple, my dear friends, but just try them. If you don't get results, please, feel free to stop. ये मेरा फेवरेट पार्ट है. How does gratitude add to your life? Abundance. हमारे हिसाब से abundance क्या होता है? पैसा, मिल्कियत? नहीं my dear friends. बहुत अच्छे दोस्त abundant है, abundance है. बहुत अच्छी नौकरी abundance है. बहुत अच्छी फैमिली एक abundance है. मेरे पास बहुत किताबें हैं जिसमें मैं पढ़ती हूँ. मतलब abundance आप नाम बोलिए और वो चीज हो सकता है. तो जब आप gratitude करेंगे तो आप आज घर पे जाके एक चीज देखिएगा, अपनी लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कौन से वाले एस्पेक्ट में मजा कम है और किसमें बहुत मजा है, आपको वहीं पता चल जाएगा. जिसमें एस्पेक्ट में मजा नहीं है वहां ग्रेटिट्यूड की कमी है, और जहां अच्छा है वहां ग्रेटिट्यूड वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? एक मैजिकल मनी है. मैजिकल मनी हम सब की जरूरत है. कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है और इस पैसे की दौड़ में हम सब हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि the poor gets poorer and the rich gets richer? Our belief, negative beliefs. ये मेरे पास ग्लास है और इस ग्लास में यदि छेद होंगे तो मैं जितना पानी डालूंगी वो पानी नीचे चला जाएगा. अब मैं जितनी भी पैसे कमाती हूँ और यदि मेरे पास नेगेटिव बिलीफ्स है तो क्या होगा? डन 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 सब बाहर. क्या होते हैं नेगेटिव बिलीफ्स? मेरे पास पैसा नहीं क्योंकि ना मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ. मतलब आपने पैसे को गाली दी कि जिसके पास ही पैसा होता है ना वो बहुत खराब आदमी होता है. तो आपके पास कैसा आएगा? What kind of feelings do you have for money? So we have these kinds of negative feelings. पैसा पेड़ पर नहीं लगता है, जितना कमाते हूँ उतना ही चला जाता है. ये सारी चीजें, क्योंकि money is frequency and we are also money is energy and we are also energy. जब हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, we will earn money. So don't have negative. Just give respect to money.
यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके पास कितना भी पैसा है, जितना भी कम है, जितना भी ज्यादा है, जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड, एटलीस्ट आई हैव दिस। और जब सच्ची में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, आपका पैसा कैसा ग्रो होगा, यू विल नॉट बिलीव इट। करके देखिएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैजिकल रिलेशनशिप्स, अब साहब हम सबको बदलना चाहते हैं। मेरे घर में ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं चाहता हूं वो ये ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले। एक एग्जाम्पल देती हूँ सर, यदि आपके घर में एक गधा है और आप चाहते हैं कि वो घोड़ा बन जाए, तो यदि उस गधे में ये काबिलियत होती कि वो घोड़ा बन जाता, तो वो क्या आपकी और मेरे कहने का वेट करता? वो कब का घोड़ा बन जाता। What am I trying to tell here? See, my dear ones, जो relationships है, we should just accept the way they are. We should not change them or change the person. Just accept whatever it is there. If you will not do that, you will enjoy magical relationships or magical health. कितनी बार आप बैठे अपने हेल्थ को थैंक्स बोलने के लिए, अपन रास्ते में देखते हैं ना किसी के पास आंखें नहीं है, एक बार देख के उधर कर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि oh my God, I'm so thankful I have got my 2 eyes. यहाँ पर एक स्टोरी याद आती है। एक भिखारी बैठा था, तो एक ऑफिस का मैनेजर वहां से निकल रहा था, क्योंकि उसके जो सेठ है उसकी आंखें चली गई थी। तो उसको लगा कि ये भिखारी तो छोटे छोटे पैसे के लिए बैठा है, इसके पास जाके बोलता हूँ। तो उस भिखारी को बोला, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा पैसा। तो ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए दिलवा सकता हूँ, आप कहोगे तो 1 करोड़ रुपया भी दे सकता हूँ, बट उसके लिए आपको दोनों आंखें देनी होगी। आपको क्या लगता है सर, सलीम सर, क्या लगता है, वो मान गया होगा क्या भिखारी? नहीं, नहीं देनी मुझे 10 लाख, 10 करोड़ के लिए भी आंखें नहीं देनी, और इन आंखों को कभी हमने कभी ब्लेस भी नहीं किया, इस बॉडी को कभी थैंक्स नहीं कहा, जिसको हम अब्यूज करते हैं खाने में, काम करने में। बहुत काम है, बहुत काम है, 24 में से 20 घंटे काम करना है मुझे, बट वी नेवर से थैंक्स टू दिस। और सबसे बड़ी बात, सक्सेसफुल करियर, gratitude will add to your career. Why? Because we will learn to appreciate what is good in our career, what is good in our job, so we will receive it back. I know I'm not coming to my last segment, how to start a gratitude practice. Please, I would request all of you to write, keep a daily journal. मैं पिछले 3 साल से लगभग रोज लिखती हूँ, कम से कम 10 से 15 रोज लिखती हूँ मैं। Why am I grateful? आप रोज क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप एक दिन लिखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और प्लीज अवॉइड रिपीटेशन हियर। आप रोज कहेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो वो नहीं होगा। आपको रोज 10 नए लिखने हैं। तो आज माँ ने खाना बहुत अच्छा बनाया था, आज मेरी बहुत तबीयत थी, मेरी माँ ने मेरा सिर दबा दिया था। इस तरह आप अलग अलग लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मेट दिया है मैंने आपको, ये वाला, आई एम थैंकफुल फॉर एंड वाई। आप सिर्फ ऐसे लिखोगे ना, आई एम थैंकफुल, ये भी नहीं लिखा किसको, ये आपका माइंड रजिस्टर ही नहीं करेगा, और अंदर वो इमोशन ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। सो यू हैव टू राइट डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल, 10 थिंग्स। अब मैं 5 चीजें कहूंगी आपको, 5 चीजें लिखिए। एक कुछ भी हो सकता है, सिंपल से सिंपल चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने परसों लिखा था, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स आए, बहुत अरसे के बाद मिलने आए। वो नहीं आते तो मेरा काम चल रहा था, उनका भी काम चल रहा था, बट वो आए तो आई एम सो ग्रेटफुल कि वो मेरे घर आए, मुझसे मिलने आए। सच सिंपल थिंग। ग्रैटिट्यूड जार, अभी सर हम बच्चों की बात कर रहे थे ना, ये ग्रैटिट्यूड जार आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप अपने डाइनिंग टेबल पर रखिए और अपने बच्चों के साथ आप भी करेंगे। आप अपने बच्चों से कहिए कि इसमें रोज हम 2-2 चीजें लिखेंगे सब, कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। आप भी लिखेंगे, बच्चे भी लिखेंगे। तो जब हम ये फैमिली में बैठ के लिखते हैं, तो बच्चे आजकल बोलते हैं ना, मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आप कुछ भी नहीं लेके आते हो, उसके पास ये है, उसके पास वो है, क्योंकि उसको हमने कभी बैठ के सिखाया ही नहीं कि लाइफ में छोटी छोटी चीजें जो उसके पास है उसको अप्रिशिएट कैसे करना है। प्लीज डू दिस एक्टिविटी विथ योर चिल्ड्रन, और महीने के आखिरी में, हफ्ते के आखिरी में उसको निकाल के बैठिए और पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा
और आपका रिलेशनशिप बहुत बदल जाएगा और आप उस बच्चे को बाकी सारी चीजों के साथ एक बेहतरीन इंसान बना के जाएंगे. When the child will learn to appreciate whatever smallest thing in his life is there. इस ग्रेटिट्यूड जार को आप कैसे बनाएंगे? कोई भी बॉटल ले लीजिए, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, बच्चों को ही दीजिए, डेकोरेट करिए और उसको डाइनिंग टेबल पर रखिए. मैजिक रॉक. मैजिक रॉक एक पत्थर लेके आना है आपको बाहर से, ये मैं रोज करती हूँ. मैजिक रॉक कोई सा भी पत्थर लेके आइए आप रोड पर से, धो के. एक पत्थर ऐसा होना चाहिए जो आपकी ऐसी मुट्ठी में आ जाए. रोज रात को आप सोने से पहले क्या याद करेंगे सर? आप कुछ गैस कर पाए सलीम सर? Stress of the day, obviously. No sir, no sir. बोलिए. We will talk about what all could happen in the day. तो आप उस किसके साथ सो रहे हैं? सब अच्छी चीजों के साथ. रात को क्यों कर रहे हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं आप. So रात को सोने से पहले जब when you will talk to your magic rock and you will tell all the good things in the day which happened, what will happen? This magic rock will be very energetic. बहुत एनर्जी होगी इसमें. आप जब जब इसको देखेंगे आपको अच्छा फील करेंगे और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेंगे. थैंक यू नोट्स. स्टार्ट करिएगा माय डियर फ्रेंड्स. छोटी छोटी नोट्स डालिए. आपके लिए किसी ने कुछ किया है, करके देखिए. ना अच्छा लगे बंद कर दीजिए, पर करके देखिए. You will really love to see the miracles and the magic you will have in your life. लोग बोलेंगे आप बहुत बदल गए हो, आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, आप तो बात करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना. ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे क्योंकि जैसे मन की स्थिति वैसी परिस्थिति. अवॉइड करिए कंप्लेन करना. कंप्लेनिंग इजी है बट डोंट फोकस योर एनर्जी ऑन दैट. उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है. बल्कि ये कहा जाता है कि यदि आपने किसी की कंप्लेन करी ना तो उसकी 7 तारीफें करिए, तब वो इक्विवेलेंट होगा. तो सोच लीजिए. Summing up, keep a gratitude journal. Remember to express gratitude in person. Be respectful and treat the same way you want courtesy and the treatment from others. Remember to smile. बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि लोग ऐसे सोचते हैं क्या कि जो लोग स्माइल करते हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चैलेंज ही नहीं है ना. माय डियर फ्रेंड्स, ये उन लोगों ने, उनकी चॉइस है. I want to smile. कभी आपने अपने पेट्स को स्माइल करते हुए देखा है? कभी डॉगी को स्माइल करते हुए देखा है? Remember to smile and not to complain. ये लास्ट वाला मेरा फेवरेट है. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Please लिख लीजिएगा ये. So always express. देखिए, I am a teacher at heart. एक होमवर्क तो बनता है ना सलीम सर? Definitely, ma'am. Please. देखिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आप कैसे लाएंगे? पीपल जस्ट लिखिएगा. अगेन आपकी चॉइस है. इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, ये सेंटेंस मैंने बहुत बार रिपीट किया है सो दैट इट रजिस्टर्स इन योर माइंड. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसमें आप लिखिए पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, things I am grateful to have, and great things that happened today. लिख के देखिए. You will love it. Thank you so much. Thank you so much, all of you, for giving me this opportunity. I'm so grateful. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And on behalf of the entire Committee on Commercial, Economic Laws and Economic Advisory, Chairman Saab, CA Dr. Rajkumar Adukia, Vice Chairman Saab, CA Hansraj Chok, we are, very lucky, I would say, to have, faculties and teachers like you. Coming up next is CS Divesh Goyal. And, marvelous inputs have come in from, this is the 11th session that is happening today. So, ma'am, thank you so much once again. Thank you so much. My pleasure, sir. We'll move ahead from here. The next topic is by CS Divesh Goyal. The topic is Annual Compliance under Companies Act 2013.
So, sir, very first thing, I would welcome you on behalf of the Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory. Thank you, sir. Chairman Sahab, C. Dr. Rajkumar Odukia, Vice Chairman Sahab, Hansraj Chok, C. Hansraj Chok. And these sessions are in continuity so that the fraternity could come here, take the knowledge, see, understand, interact, and they be updated with the latest knowledge in the market. So, short profile about CS Divesh Goyal. He's a commerce graduate and a fellow member of the Institute of Company Secretary of India, having intense expertise in corporate law for the last 9 years. He is young and progressive, practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuisance of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done meticulous research and has spent various articles of the Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically dissect the implications of various provisions of the new act, which is required today. He has co-authored the Company Law Premier Book published by the Institute of Company Secretaries of India. He's also added a lot of issuances of various guidance notes by ICSI. He was a member of the Task Force Committee and Research Committee for 3 years. He's a member of various committees of the NIRC of ICSI. His articles have been published in ICSI magazines and are available on various popular websites relating to corporate law. He has deliberated several forums on corporate law throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated for more than 200 seminars and penned approximately 800 articles on multiple topics of corporate law. He is running portal for vacancy for CS members, trainees to help the fraternity. He is holding workshops and uploading videos through YouTube on regular basis. So I welcome CS Divesh Goyal. So you may take it ahead from here. So you are mute, I suppose. Yes, you are mute, sir. You are mute. Thank you so much, Salimji. Thanks for the introduction and your words. So first of all, I would like to thanks to the committee and Dr. Rajkumar Adukia ji and Hansraj Chok ji for giving me an opportunity to interact with the members. And definitely, I must say this is a very great initiative by the committee for the knowledge of the member, for the, we can say, betterment of the fraternity. So this type of program should be held and this type of program should be conducted on the regular basis. So everyone, we can say, will get the benefit and everyone will get the updated knowledge about the different topics. So today the topic which is assigned to me is the annual compliances. Annual compliances of a private limited company or annual compliances of a company. See, whenever we say about the annual compliances of a company, lot of things came into our mind because as a company, we know lot of things we have to do, lot of returns we have to file, lot of documents we have to prepare. But generally what happened, the purpose of choosing of this topic, generally what happened as a professional, we are the chartered accountant, company secretary, generally what happened when a new, we can say new client, new person came to us for the incorporation of the company, for the setting up of a business, for starting a new business. So the most important thing in front of us at that time, when anyone approach us for the new company, the person generally asks, what will be the compliances of the company? What will be the cost for those compliances? So at that time, we must be aware what are the at least minimum, bare minimum compliances of a company. Because practically what happened, we all are aware कि companies को क्या compliances करने हैं, company की क्या compliances है. But we generally can say we are not having a list of the bare minimum compliances of the company. And this list of the bare minimum compliances is very important because whenever we have to analyze how we should charge a client, whenever we have to analyze how we should, we can say, consult with the new client, so we must have this list of the annual compliance calendar. We can say list of the bare minimum compliances of a company. So आज का जो सेशन है इसका टोटली मेरा पर्पस है to discuss with all of you, to enrich everyone with the bare minimum compliances of a company. So hope after this session, if anyone will ask us what are the minimum compliances of the company, then we will aware कि yes, these are the minimum compliances of a private limited company. I have specifically mentioned here private limited companies because we know in India, if we pick up the data, I will research on the data, almost more than 80% companies in India
almost 80% companies in India are the private limited companies. So we as a chartered accountant, company secretary are working for a lot of private limited companies as a statutory auditor, as an internal auditor, as a consultant, as a advisor. So at that time, सबसे पहले हम लोगों का ही बेसिक क्लियर होना चाहिए कि what are the compliances we should be aware कि what are the minimum compliances. So let's start our session with the discussion on the bare minimum compliances of the company. So we know Companies Act 2013. It came into effect from the 1st April 2014. Before 2014, there we were working under Companies Act 1956. Under Companies Act 1956, there was lot of, we can say, relaxation to the private limited companies in comparison to the public companies. At that time, generally there was a saying that private companies are having a very less compliances and the public companies are having lot of compliances. So at that time, private companies was running with the less compliances. But when this new act came, when this Companies Act 2013 came, scenario has been changed. It's almost 8 years. 8 years has been passed when this Companies Act 2013 came, but still the scenario is changed. Scenario is totally changed from the 1956. At the time when this Companies Act came on the 1st April 2014, ministry, the government have increased the level of the compliances of the private company up to this. But at that time, the private companies was also required to do lot of compliances like public companies. So it was we can say it was literally a difficult situation for all the professional and the corporates ki how to continue the private limited companies. Everyone was having the thought that we should convert the company into LLP or we should close the company because the compliance level has been increased a lot. So ministry came to know about this. Ministry understood the same ki yes, there are the lot of compliances. There should be some relaxation. There should be some basis ki on the compliances should be reduced. So finally, ministry have introduced 2 notifications. As you can see the name date of the notification on screen. Ministry introduced 2 notifications. First notification on the 5th June 2015 and the second notification on the 13th June 2017. By these 2 notifications, ministry have given exemptions from almost 40 to 50 compliances of the Companies Act. So they have given the exemption from almost 40 to 50 compliances of the So they have given this relaxation for almost 40 to 50 relaxation. This was the very big relaxation. This was the very big relaxation under the Companies Act because after that the scenario has been changed. Lot of we can say relaxation given to the private company. Lot of benefits they are getting under the Companies Act. I'm just giving 1 or 2 examples. Like private companies, generally the question arises from whom private company take loans, from whom private company take deposits. So if we will go through the act says private companies can take loan from the directors and the relative of the directors. Even the Companies Act don't allow the private company to take loan from the shareholders. But if you will see, you guys must doing in your companies, must doing with your client key, you must be taking the loan from the shareholders. Where it is mentioned, where it is allowed to us to take the loan from the shareholder. Now where it is allowed under Companies Act. It is allowed under the notification of the 5th June 2015, in which exemptions given to the private companies. Means we can say as on date, still as on date, it is not mentioned under Companies Act that you can take loan from the shareholder. No, nowhere it is mentioned. It is mentioned under the exemption notification. Because of that, we can take the loan from the shareholder. So like this, lot of relaxation was given to the private companies. Relaxation are given, but along with the relaxation in last 8 years, due to the corporate governance or due to, we can say, proper compliance of the companies, lot of new returns has been introduced, lot of new compliances has been introduced under the Companies Act 2013. Before moving further, let's read the definition of the private company. As per section 2, subsection 68 of the Companies Act, private company means a company which by its article restrict the right to transfer of share, limit the number of members to 200 and prohibit invitation from the public. And 1 relaxation is given to the companies. Earlier in 1956 Act and in 2013 Act, there was a provision that if you want to incorporate a private company, then there should be at least 1 lakh rupees of the paid up capital. There was requirement of the minimum paid up capital of the 1 lakh rupees in the private company. But after Companies Act 2013,
this restriction, this provision has been removed. In last 5 to 6 years, this provision has been removed. Now you can have a private company without any share capital. Generally, I will say you can incorporate a company just with ₹2. Why I'm saying ₹2? Because at least 2 shareholders should be there. Every shareholder will subscribe ₹1 of share. So as on date, you can incorporate the company with just ₹2 of capital. This is the level of ease of doing business in India. So as we can say, features of the private company: no need of the minimum paid up capital. Private company can accept loan from the member up to 100% of the paid up capital frees up without any restriction. And one of the major relaxation given to the private companies are not required to file Form MJT 14 for the board resolution passed under Section 179. And another big relaxation to the private company, Section 185, that is the most important section under Companies Act. That is very important from the purpose of the statutory auditors also, because you have to report on the 185 under CARO. Section 185 will not be applicable on the private company if they fulfill some condition given under the exemption notification. So these are the some, we can say, feature of the private company. Now I will take you toward directly on the compliance calendar. As we are having only 1 hour to discuss, up to 6 I am here to discuss. So I want to move directly to the compliance. Annual compliance of the private company. First, I will just brief you about this. I have divided this presentation into 4 parts. Quarterly. We know the financial year of the company. Under Companies Act, financial year of the definition of the financial year is mentioned that the financial year of the company shall be April to March. This is the provision under Act that your financial year should be from the 1st April to 31st March. This definition is specifically mentioned under the Act. There are only 3 situations when an Indian incorporated company can change its financial year. You must be aware, many of you must be aware what are these 3 conditions. So there are only 3 reasons. Because of that, you can change your financial year. Except those 3 reasons, there is no other provision under Companies Act which allows you to change your financial year. So please be focused. What are the 3 conditions on which you can change your financial year from April to March to any other period? Condition number 1, when your holding company is incorporated outside India. If your holding company is incorporated outside India, in that case, Indian company is allowed to change their financial year as per requirement of the holding foreign company. But for the financial year change, you require the approval from the regional director. Regional director की approval mandatory है financial year change करने के लिए. This is the first condition. Second, when your subsidiary is incorporated outside India, अगर आपकी subsidiary इंडिया के बाहर incorporated है, उस सिचुएशन में भी आपको इंडियन कंपनीज एक्ट अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना अलाउड करता है as per the financial year of that subsidiary. And condition number 3, when your associate company is incorporated outside India. अगर आपकी associate company इंडिया के बाहर incorporated है, उस कंडीशन में भी इंडियन कंपनीज एक्ट अलाउ करता है आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना. So only these are 3 situations when you can change your financial year. इंडिया में अगर हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं 80%, आउट ऑफ 80% 1 or 2% कंपनीज हैव चेंज्ड देयर फाइनेंशियल ईयर. Otherwise, almost 99% of the private companies having financial year April to March. That's why in this presentation, I am covering the financial year period April to March, and I have divided my compliance level into 4 parts: April to June, July to September, October to November, December, January to March. So quarterly we will discuss. Because quarterly discuss करने का सबसे बड़ा benefit क्या है? आप लोगों को ये चीज confusion नहीं होगी कि हमें अच्छा ये 10 compliances करने हैं तो कब कब करने हैं. At least we will be aware कि okay 10 में से ये 3 compliances इस क्वार्टर में करने हैं, तो we will give the focus on these 3 compliances on specifically. So let's start for discussion. First quarter of the year, April to June. अगर हम बात करते हैं now presently we are in the month of May 2022. अगर हम बात करते हैं first quarter of April 2022 to June 2022, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अप्रैल टू जून. अप्रैल 2022 टू जून 2022 के बीच में क्या क्या प्रोविजन है,
क्या क्या कंप्लायंसेस है, क्या क्या ड्यू डेट्स है. ड्यू डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है ड्यू डेट्स की वैल्यू क्या होती है. चाहे वो जीएसटी की ड्यू डेट्स हो, चाहे वो टीडीएस की ड्यू डेट्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स की ड्यू डेट हो, सेम लाइक दैट कंपनी लॉ में भी अपनी ड्यू डेट्स एंड ड्यू डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यू डेट्स की अपनी एक वैल्यू है. सो ड्यू डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ड्यू डेट्स हमारी इस क्वार्टर में कवर हो जाएगी. सो फर्स्ट कंप्लायंस एज अ कंपनी हम बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ द MBP1 अंडर सेक्शन 184 सबसेक्शन 1. MBP1 होता क्या है? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी in the first meeting of the board of director in each financial year shall disclose his interest in other entities. फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में डायरेक्टर डिस्क्लोज करेंगे कि वो कहां कहां इंटरेस्टेड है, वो किस कंपनी में इंटरेस्टेड है, किस कैपेसिटी में इंटरेस्टेड है, किस एलएलपी में इंटरेस्टेड है, किस पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्टेड है. तो एवरी क्वार्टर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को डिस्क्लोजर देना है. जनरली वी प्रेडिक्ट कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अप्रैल टू जून क्वार्टर में होगी ही होगी. दैट्स व्हाई वी केप्ट इट एज अ फर्स्ट कंप्लायंसेस. एवरी कंपनी, whether you are a private company, public company, small company, 1% company, किसी को भी exemption नहीं है. Every company is required to take disclosure under MBP1 from its director in first board meeting of the year. So this is the first compliances. अब MBP1 तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा पहला कंप्लायंस है, हमें ईयर की फर्स्ट मीटिंग में MBP1 लेना है अपने सभी डायरेक्टर से. MBP1 की रेलिवेंस क्या है? MBP1 की रेलिवेंस क्या है फ्रॉम द पर्पस ऑफ द ऑडिटर? बिकॉज जो मेरा इस सेशन का बेस है ना, ये बेस मैं कंपनीज को नहीं लेके चल रहा हूँ. इस सेशन को मैं बेस लेके चल रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कैपेसिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर और कंसल्टेंट. इसको मैं बेस लेके चल रहा हूँ. तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि MBP1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सी एज अ ऑडिटर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शंस किए हैं, वो ट्रांजेक्शन कंपनी ने क्या कोई रिलेटेड पार्टीज के साथ किए हैं, कोई ऐसी एंटिटीज के साथ किए हैं डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जिसमें. तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमने क्या किसी ऐसी एंटिटी से के साथ ट्रांजेक्शन किए हैं कि जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? तो उसके लिए एज अ ऑडिटर जब भी मैं ऑडिट करूंगा, आई विल डेफिनेटली आस्क फ्रॉम द कंपनी टू प्रोवाइड मी द MBP1. बिकॉज कंपनी जब MBP1 मुझे प्रोवाइड करेगी, उस MBP1 को मैं बेस लूंगा और उसके बेस में मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ओके दीज आर द इंटरेस्टेड एंटिटीज, दीज आर द एंटिटीज वेयर डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड. देन आई विल चेक कि ओके इन एंटिटीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ. अगर उन एंटिटीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आई हैव टू चेक द मिनट्स कि जब ये ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास हुआ तो क्या ये डायरेक्टर प्रेजेंट था या नहीं था. बिकॉज हमें पता है इंटरेस्टेड मैटर में डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हो सकते और ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. बिकॉज ऑडिटर को AS 18 के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बनाने हैं, तो रिलेटेड पार्टीज के लिए भी पता होना चाहिए कि डायरेक्टर कहाँ इंटरेस्टेड है. और जनरली डायरेक्ट अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लोन जा रहा है जहां पे आपका डायरेक्टर है तो 185 अट्रैक्ट हो जाता है, आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. तो उसके लिए आपको चेक करना कि आपका डायरेक्टर कहाँ पे डायरेक्टर आप MBP1 को बेस लेके चल सकते हैं. So MBP1 is a very important document from the point of view of the statutory auditor. Because अगर statutory auditor MBP1 को कंपनी से लेते हैं at the time of audit, तो बहुत सारी चीजें वो एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कहाँ डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है. जहां इंटरेस्टेड एंटिटी से कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, चाहे लोन लिया है, any sale, purchase or any other transaction, then you can easily identify the entities and can easily identify the transaction. Because Companies Act में बहुत restriction है interested entity के साथ transaction and all चीजों पर. और second thing, MBP1 के लिए एक छोटी सी और चीज मैं बताना चाहूंगा. MBP1 जो ये section 184 है, ये बोलता है during the year डायरेक्टर ने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तो दे दिया MBP1. अब ड्यूरिंग द ईयर जब डायरेक्टर के इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगे तब वो रिवाइज MBP1 कंपनी को सबमिट करेगा. तो जब चेंजेस आए हैं तब रिवाइज MBP1 कंपनी के पास सबमिट होगा. सेकंड कंप्लायंस, अभी हमने फर्स्ट कंप्लायंस बात किया डिक्लेरेशन अंडर MBP1. नाउ द सेकंड कंप्लायंस इज रिसिप्ट ऑफ द DIR 8. DIR 8 is called for as a certificate declaration of non disqualification. हमें पता है कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने फेस किया होगा लास्ट 5 सालों में बहुत डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुए हैं. क्यों वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं? कंपनीज एक्ट चाहे 1956 की बात करें या कंपनीज एक्ट 2013, इन बोथ एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन
जो कंपनीज एक्ट 2013 में there is a section 164. There is a provision if any company has not filed its financial statement or annual return for continued 3 years, then the director shall be considered disqualified. And what will be happen when a director will disqualified? He will not able to continue as a director. And if he will not able to continue as a director, then he company cannot perform their activities. They have to appoint the new director. But how it will impact to the auditor? So every company should take this declaration from the director every year, or I must say you should take this declaration every year in the first board meeting itself, that I am not disqualified to continue as a director. As I mentioned here, every director of the company in each financial year will submit with the company disclosure of non-disqualification. Every director will submit with the company that I am not disqualified to continue as a director. तो वो कंपनी को सबमिट करेगा कि मैं एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हूं. दिस इज द सेकंड कंप्लायंस. बट अगेन आई विल से कि जो आज का सेशन है ये मैं कंप्लीटली ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहता हूं. तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है हाउ दिस डिक्लेरेशन विल इम्पैक्ट द ऑडिटर. यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट, और आप लोग रेगुलर बेस पे प्रिपेयर करते हैं, और अभी मई का मंथ चल रहा है, जैसे ही अगस्त सितंबर आएगा यू हैव टू प्रिपेयर द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट फॉर सो मेनी कंपनीज. अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट कौन से सेक्शन में बनाते हो आप लोग? ऑडिटर रिपोर्ट बनती है सेक्शन 143 में. सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, क्या क्या डिक्लेरेशंस देनी है. सो जो आप लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट बनती है एज पर सेक्शन 143. और सेक्शन 143 और सबसेक्शन 3 में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या डिक्लेरेशन डिस्क्लोजर आपको ऑडिट रिपोर्ट में देना है. सो इफ यू विल रीड द सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज डी, section 143 subsection 3 clause G, if you will read this you will find out auditor have to report in their statutory auditor report whether any director of the company is disqualified or not. So now see the importance of this document. As an auditor आप लोग एमसी की साइड से चेक कर लोगे कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं है. बट बहुत बार क्या होता है 3 साल कंप्लीट होते ही एमसी डिस्क्वालीफाई नहीं करता है. एमसीए तो पीरियडिकली जब भी रिटर्न नोटिस इशू करता है तो वो एक साथ बहुत सारे इयर्स के लिए नोटिस इशू करता है. तो एमसीए की साइड यू कैन नॉट यूज एज अ प्रूफ, यू कैन नॉट यूज एज अ एविडेंट कि डायरेक्टर इज नॉट डिस्क्वालीफाइड. सो हाउ यू विल satisfy yourself at the time of the statutory audit that this director is not we can say this director is not disqualified. So the main question, how we satisfy ourselves that our director is not disqualified. So for that purpose you can take base from the DIR 8 declaration. This declaration DIR 8 will help you to identify that director is not disqualified, or if any director is disqualified then you have to report it specifically in your return that the director is disqualified. So this is a very important provision, very important document. This document you should take at the time of audit, because you cannot complete your audit without taking off this document. So this is the second compliance of the year. Third and very important compliance, that is under section 405 MSME1. MSME1, it was a new form introduced under Companies Act 2013. There was no form like MSME1 in the Companies Act 1956. First time company MSME1 is introduced under Companies Act 2013. So section 405 is talking about the MSME Act. As per MSME1, as per section 405, every company, whether you're a one-person company, small company, private company, public company, non-small company, every company is required to file a yearly return, half-yearly return. As I mentioned here, company have to file this return half-yearly in respect of pending payment to the MSME vendor at the end of the year. So this is the half-yearly return. This year return you have to file within 30 days of the end of half year. So for the financial year ended on 31st March 2022, right now we are talking about the
financial year ended 31st March. So for the financial year ended 31st March 2022, your due date of the filing of MSME was 30th April 2022. So every year, every company have to file MSME 1 form till 30th April. अब MSME 1 फॉर्म फाइल किस लिए होता है? MSME 1 सिर्फ उसी सिचुएशन में, सिर्फ उसी कंडीशन में फाइल होता है जहां पे कंपनी ने किसी MSME वेंडर की पेमेंट में डिफॉल्ट किया है या कंपनी ने किसी MSME वेंडर की पेमेंट में डिले किया है। सिर्फ उसी केस में MSME 1 फाइल करना होता है, अदर सिचुएशन में MSME 1 फाइल नहीं होता है। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, as for the brainstorming I just want to discuss with all of you that question। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है, किस सिचुएशन में मानेंगे कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है या डिले किया है? डिले तो एक दिन का डिले भी डिले है और एक साल का डिले भी डिले है, तो हाउ वी आइडेंटिफाई कि किस डिले को हमें यहाँ रिपोर्ट करना है? बिकॉज यहाँ लिखा है इस प्रोविजन में, सेक्शन बोलता है, ये फॉर्म बोलता है, अगर आपने MSME वेंडर्स की पेमेंट में डिले किया है या डिफॉल्ट किया है तो यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ सच पेमेंट्स, सच वेंडर्स इन योर MSME 1 फॉर्म। और हाफ ईयरली ये फॉर्म आपको मिनिस्ट्री को फाइल करना पड़ता है। अक्टूबर टू मार्च वाले हाफ ईयर के लिए 30 अप्रैल तक, और अप्रैल टू सितंबर के लिए 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म फाइल होता है। तो यहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज हियर मीनिंग ऑफ द डिफॉल्ट, व्हाट वी विल कंसीडर एज अ डिफॉल्ट। सो जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं ना, तो वी हैव टू रीड द MSME एक्ट 2006। 2006 में MSME एक्ट पास हुआ। इट इज अ वेरी स्मॉल एक्ट, जस्ट वी कैन से 25 to 30 section act, and it is my recommendation, it is my suggestion to all the chartered accountant, you all should read this act, MSME act. So as per MSME act, if a company delay in payment more than 45 days from the due date, more than 45 days from the invoice date, then such payment shall be considered as delayed. So अगर आपने 45 दिन तक किसी MSME वेंडर को पेमेंट नहीं की, यहाँ MSME वेंडर से मतलब है that vendor should be registered under माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्ट, दैट इज MSME एक्ट में वो रजिस्टर होना चाहिए एज अ माइक्रो और स्मॉल। मीडियम की यहाँ पे डिटेल नहीं जाती है। इफ यू आर रजिस्टर्ड एज माइक्रो और स्मॉल देन योर डिटेल विल बी फाइल अंडर दिस फॉर्म। सो आपको चेक करना पड़ता है कि आपके ऐसे कौन कौन से वेंडर है जो माइक्रो या स्मॉल में रजिस्टर्ड है, उनकी पेमेंट में अगर आपने 45 डेज से ज्यादा का डिले किया है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर आपने 45 डेज क्रॉस हो चुके और पेमेंट नहीं की है, यू हैव टू गिव देयर डिटेल इन दिस फॉर्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म। As you all are the chartered accountant, you all are the statutory auditor, you must have seen one thing, that आप लोगों को notes to accounts of the balance sheet के notes to accounts में as per section 20 of the MSME Act disclosure देना पड़ता है कि कंपनी ने कितने MSME वेंडर्स की पेमेंट में डिले किया है, कितना इंटरेस्ट उन पे पेंडिंग है, कितना एक्रूड है, कितनी पेमेंट्स आपने डिले की है, उस पे कितना इंटरेस्ट। ये सारी डिटेल आपको अपनी बैलेंस शीट में मैच करनी है। अब एज अ ऑडिटर 2006 से लेके आज तक इशू यही होता था कि ऑडिटर कंपनी से पूछता है कोई MSME वेंडर है, कंपनी बोलती है नहीं, दैट्स इट। ऑडिटर भी डिक्लेरेशन लेके, MRL लेटर लेके डिक्लेरेशन दे देता है, देयर इज नो MSME वेंडर, देयर इज नो डिफॉल्टेड पेमेंट ऑफ MSME वेंडर। बट नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज। अब अगर कंपनी ने MSME 1 फॉर्म फाइल कर दिया है मिनिस्ट्री के पास, MSME 1 फॉर्म सिर्फ उसी केस में फाइल होगा जहां कंपनी ने डिले पेमेंट की है। तो MSME 1 फॉर्म अगर मिनिस्ट्री के पास फाइल हो जाता है तो इट अपने आप में एक सेल्फ डिक्लेरेशन है फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी की वी हैव मेड डिले इन पेमेंट ऑफ द MSME वेंडर। नाउ ऑडिटर्स का व्यू बहुत क्लियर है, ऑडिटर्स का वे बहुत क्लियर है। ऑडिटर्स को कुछ नहीं करना, ऑडिटर्स को ये 2 फॉर्म कंपनी से लेने हैं जो हाफ ईयरली 2 फॉर्म फाइल हुए हैं, उन फॉर्म्स के बेस पर डिटेल बनानी है और बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में दे देना है कि इतने MSME वेंडर थे जिनकी पेमेंट में इतना डिले हुआ तो इन पे इतना इंटरेस्ट बन गया। बिकॉज MSME एक्ट बोलता है कि अगर आप किसी वेंडर की पेमेंट में डिले करते हो 45 डेज से ज्यादा, तो आपको 3 टाइम ऑफ द RBI इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सब डिस्क्लोजर एज अ ऑडिटर आपको ऑडिट रिपोर्ट में भी देने, बैलेंस शीट में देने पड़ते हैं, तो वहां पे ये फॉर्म आपको हेल्प करेगा। This is the third compliance of the Companies Act or third compliance of the quarter April to June, that is filing of the MSME 1.
सो MSME 1 एवरी ईयर 30 अप्रैल तक एवरी कंपनी को फाइल करना है। हाँ, ऐसी कंपनी जिसने किसी वेंडर की पेमेंट में डिले नहीं है 45 दिन से ज्यादा, जिसका डिलेड डाटा नील है, 45 दिन से ज्यादा कोई डिलेड नहीं है, तो उसको फॉर्म नहीं फाइल करना। पर अगर एक भी ट्रांजेक्शन है तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फोर्थ कंप्लायंस ऑफ द ईयर और फोर्थ एंड लास्ट मैंडेटरी कंप्लायंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज ई फॉर्म DPT3. It's fall under section 73 and rule 16, that is E form DPT3. DPT3 का पर्पस होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. As I mentioned here, company is required to file this form every year on or before 30th June in respect of return of deposit and particular not considered as deposit as on 31st March. DPT3 की ड्यू डेट होती है 30th June. Right now we are in the month of May. Next month 30th June will be the due date for the filing of the DPT3. अब DPT3 तो बहुत important document है from the purpose of auditors. I must say DPT3 is the one of the most important compliances from the purpose of the statutory auditor because DPT3 fall under section 73. Auditors को अपनी कारों की रिपोर्ट में specific disclosure देना होता है whether company has complied with the provision of section 73 or not. So ये चीज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए DPT3 फॉर्म बहुत हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा? DPT3 में आपको डिटेल्स क्या देनी होती है? DPT3 में हमें डिटेल्स देनी होती है कि अगर कंपनी का 31 मार्च को कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग है, कोई भी एडवांस लिया हुआ है कंपनी ने, तो ये डिटेल आपको DPT3 में देनी है एज ऑन 31 मार्च. अब जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी को ना एक लिमिटेड रिसोर्स से लोन लेना अलाउड है. लाइक प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकती है, शेयर होल्डर से ले सकती है, अदर बैंक से ले सकती है, आउटसाइड इंडिया से ले सकती है, शेड्यूल बैंक से ले सकती है, FIIs से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ले सकती है, NBFC से ले सकती है. बट अगर हम बात करते हैं दूसरी कंपनी से ले सकती है. अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर के रिलेटिव से, तो LLP कंपनीज एक्ट में कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं है शेयर होल्डर के रिलेटिव से लोन लेना. अब हम बात करते हैं लोन फ्रॉम LLP. अब ये क्वेश्चन में अगर आप लोगों से पूछूं, अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, क्या प्राइवेट कंपनी LLP से लोन ले सकती है, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा यस, बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा नो, बहुत सारे लोगों का आंसर आ सकता है इट इज कंडीशनल. अब ये चीज एज अ ऑडिटर, अब हम बात करते हैं एज अ ऑडिटर आप इस फोर्थ कंप्लायंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. अब ये चीज एज अ ऑडिटर आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या जिस प्राइवेट कंपनी के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, क्या वो प्राइवेट कंपनी एक LLP से लोन ले सकती है, या आपकी प्राइवेट कंपनी ने लोन ले लिया है. अब आप उसको क्या कंसीडर करोगे अपनी कॉरो रिपोर्ट में, क्या कंसीडर करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. तो एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम द LLP until unless that LLP is your shareholder. अगर वो LLP कंपनी की शेयर होल्डर है तब तो ठीक है, अगर वो LLP कंपनी की शेयर होल्डर नहीं है तो एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी LLP से लोन नहीं ले सकती. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू क्या आ जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो ऑडिटर्स के सामने आया हुआ है कि अगर ले चुके हैं तो अब कहाँ दिखाना पड़ेगा, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा, और अगर LLP से लोन लिया हुआ है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. वो इस फॉर्म से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो. सो DPT3 इज रिक्वायर्ड टू फाइल बाय एवरी कंपनी टिल 30th June. हाँ, ऐसी कंपनी जिसका कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है 31 मार्च को, जिसका कोई एडवांस आउटस्टैंडिंग नहीं है 31 मार्च को, उस कंपनी को DPT3 नहीं फाइल करना. इसके अलावा ईच एंड एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल DPT3 till 30th June every year. These are the 4 compliances of the first quarter. Compliance number 1 is declaration under AMBP1. Compliance number 2, receipt of declaration under DR8. Compliance number 3, half yearly return MSME1. The due date is 30th April or 30th October. Or fourth and last mandatory return of the first quarter, that is DPT3. DPT3 due date is the 30th June. So how first quarter is clear to everyone. First quarter बहुत crucial होता है. Then now second quarter and the most important quarter, that is July to September. अब आपको पता है July to September second quarter. Why I am saying it is a most important quarter? आप लोगों को पता है July to September year के पीरियड में आप लोग क्या करते हो. जुलाई टू सितंबर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. सो वी कैन से जो ये हमारा टाइम पीरियड है, जो हमारा ये जुलाई टू सितंबर का पीरियड है,
this is one of the most important quarter of the year. अब जुलाई टू सितंबर जब क्वार्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला कंप्लायंस ही आता है अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 134. प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू द एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बात करते हैं प्रोविजंस की, बिकॉज हम कोई भी कंप्लायंस अभी तक जो डिस्कस किया है विदाउट प्रोविजन डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे मेरा पर्पस आप लोगों को रटाना नहीं है, समझाना है. कंपनीज एक्ट बोलता है एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो विद इन 6 months टिल 30 सितंबर मुझे फाइनेंशियल एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है. और एनुअल जनरल मीटिंग के साथ कंडीशन है, एनुअल जनरल मीटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द ऑडिट, विदाउट रिसीप्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बिकॉज एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या होता है, जब आप नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शेयर होल्डर को शेयर करते हो ना, उसके साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करते हो, ऑडिटेड डायरेक्टर रिपोर्ट जाती है, सॉरी ऑडिटर रिपोर्ट जाती है, डायरेक्टर रिपोर्ट जाती है. ये सब चीजें मैंडेटरी है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ. अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ना, तो आप एजीएम भी कंक्लूड कभी कर नहीं सकते. बहुत बार ऐसे केसेस आपके पास आते होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सितंबर तक बने ही नहीं, नवंबर या दिसंबर में जाके बने हैं, तो उस केस में आपकी एजीएम भी नवंबर या दिसंबर में होगी. नो डाउट वो कंपनी लोग का नॉन कंप्लायंस होगा, पर उस केस में एजीएम भी नवंबर या दिसंबर में जाकर आपकी होगी, आप सितंबर में नहीं कर सकते. सो कंपनी लॉ बोलता है एजीएम 30 सितंबर तक सभी कंपनीज की हो जानी चाहिए. और एजीएम करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी कैन नॉट होल्ड द एजीएम. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जुलाई टू सितंबर क्वार्टर का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है. बिकॉज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तभी और चीजें बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तभी ऑडिट होगी, ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तभी डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी. ये सब कुछ बनेगा तभी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जाएगा, और नोटिस जाएगा तभी एजीएम होगी. तो एक बहुत सीक्वेंसिंग वर्क चलता है ये वाला. तो जुलाई टू सितंबर का पहला अगर कंप्लायंस बोले और कंपनीज एक्ट का 5वां कंप्लायंस बोले तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Preparation of the financial statement fall under this quarter. I will try to conclude this all the compliance calendar till 5:50. So next 10 minutes, in the last 10 minutes we can discuss the questions. So जैसा questions अभी हमें chat box में मिल रहे हैं, किसी और के भी कोई question है, कोई query है, so it's my request to every participant कि अगर आपका कोई भी question query है तो please वो question query आप लोग हमें पहुंचाएं, so that in last 10 minutes we will discuss those questions or those queries. So first compliance of the year is approval of the financial statement. अब यहाँ पे मैंने अलग से नहीं लिखा, इसी में एड ऑन कर दिया, मैं बता देता हूँ. 5 के साथ बोल सकते हो 5.1 नंबर कंप्लायंस इज प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, रिसिप्ट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ऑडिटर्स को देगी, देन ऑडिटर विल गिव दिस ऑडिटर रिपोर्ट. सो पहला कंप्लायंस होता है जुलाई टू सितंबर का, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है प्लीज शेयर दिस प्रेजेंटेशन. आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद द ऑर्गेनाइजर्स सो दे कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू. और ये प्रेजेंटेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे, सब जगह भी अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हो, बट आई विल शेयर इट. सो फर्स्ट कंप्लायंस फॉर द जुलाई टू सितंबर इज अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन सेकंड कंप्लायंस ऑफ द जुलाई टू सितंबर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट. Director's report is impossible to prepare without financial statement and auditor report. Financial statement and auditor report जब कंपनी के पास होंगे तभी वो डायरेक्टर रिपोर्ट बना सकती है, अदरवाइज नहीं. बिकॉज डायरेक्टर रिपोर्ट में बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर्स जाते हैं. डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर्स डिस्क्लोजर देते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि अगर ऑडिटर ने कुछ क्वालिफिकेशन रिपोर्ट की है तो उस क्वालिफिकेशन के ऊपर रीजंस मेंशन करते हैं. तो क्वार्टरली डायरेक्टर रिपोर्ट कभी भी फाइनेंशियल्स के बिना नहीं बन सकती. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बन सकती. तो पहला कंप्लायंस इस क्वार्टर का है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकंड कंप्लायंस इस क्वार्टर का है प्रिपरेशन ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, डायरेक्टर रिपोर्ट बन गई. अब प्रैक्टिकली थर्ड कंप्लायंस होता है, जो मैंने थोड़ा पोजीशन चेंज कर दिया है. थर्ड कंप्लायंस ऑफ द क्वार्टर, इशू ऑफ द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग. अब आपको एज अ थर्ड कंप्लायंस जनरल मीटिंग का नोटिस देना है. Every notice of the annual general meeting will be prepared as per section 101 of the Companies Act and Secretarial Standard 2. जब भी आप जनरल मीटिंग का नोटिस बनाएंगे आपको सेक्शन 101 कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा
और आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे. So these are the two things, these are the third compliances of the companies that इस क्वार्टर में सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर रिपोर्ट रेडी होगी, फिर आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी, देन आप नोटिस ऑफ एजीएम प्रिपेयर करोगे, जनरल मीटिंग का नोटिस, जिसमें आप जनरल मीटिंग के नोटिस में एजेंडास दोगे. देन नेक्स्ट कंप्लायंस होगा सेंडिंग ऑफ द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. नोटिस प्रिपेयर हो गया, फाइनेंशियल प्रिपेयर हो गए, डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होगी. तो नेक्स्ट कंप्लायंस ऑफ दिस ईयर यू हैव टू सर्कुलेट द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग. नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग आपको किस किस को भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको जनरल मीटिंग का नोटिस सभी डायरेक्टर्स को सेंड करना है, आपको जनरल मीटिंग का नोटिस सभी मेंबर्स को देना है, आपको जनरल मीटिंग का नोटिस सभी ऑडिटर्स को देना है. तो जो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग है आपका, वो इन तीनों को सेंड हो जाएगा और ये मैंडेटरी है. समटाइम मैंने देखा है कंपनीज अपने ऑडिटर्स को नोटिस नहीं दे रही है, तो ये नॉन कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट का. इफ यू आर अ ऑडिटर यू शुड आस्क द कंपनी की व्हाई दे हैव नॉट सेंड द नोटिस टू यू. नहीं सेंड करते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन डालो कि कंपनी ने सेक्शन 101 और सेक्टर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए हैं. सो ऑडिट जनरल मीटिंग का नोटिस मैंडेटरी है, डायरेक्टर्स को जाना, मेंबर्स को जाना, ऑडिटर्स को जाना, और अगर डिबेंचर ट्रस्टी है तो डिबेंचर ट्रस्टी को भी जाना. सो इस क्वार्टर में अभी हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग बनाएंगे और नोटिस को सर्कुलेट भी करेंगे. अब आता है सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें सर्कुलेट करनी है. सेक्शन 136 बोलता है कंपनी विल सेंड टू द मेंबर्स द कॉपी ऑफ अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग. तो आप जो जनरल मीटिंग का नोटिस सर्कुलेट करेंगे, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ मैंडेटरी है ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना चाहिए, डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट्स भी जानी चाहिए. इन सभी कंप्लायंसेस के बाद नेक्स्ट कंप्लायंस आता है होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. नाउ एज पर दिस सेक्शन every company shall in each year hold in addition to any other meeting a general meeting as its annual general meeting. So every year companies को अपनी annual general meeting hold करना mandatory है. तो every company shall in each year hold the annual general meeting. तो annual general meeting 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए. इस मेंशन भी किया मैंने, it shall be had within period of 6 months from the date of the closing of the financial year. तो इस क्वार्टर के कंप्लायंसेस की जो बात करते हैं हम सेकंड क्वार्टर के, अगर हम सेकंड कंप्लायंसेस क्वार्टर के कंप्लायंसेस की बात करते हैं, जुलाई टू सितंबर है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करेंगे, देन ऑडिटर से ऑडिट करवा के ऑडिटर रिपोर्ट लेंगे, देन डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, देन नोटिस ऑफ एजीएम ड्राफ्ट करेंगे, नोटिस ऑफ एजीएम विद ऑल दिस डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करेंगे, देन हम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे. दीज आर द मैंडेटरी कंप्लायंसेस. अब चाहे आपकी कंपनी की 0 टर्नओवर हो या चाहे आपकी कंपनी की 1000 करोड़ में टर्नओवर हो, जो कंप्लायंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ये उन सभी कंपनीज को करने ही पड़ेंगे. डजंट मैटर कि आपकी टर्नओवर क्या है, डजंट मैटर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, डजंट मैटर कि आपका स्टेटस क्या है. अब इस क्वार्टर में एक और कंप्लायंस करना पड़ता है, कंप्लायंस नंबर 11, दैट इज फाइलिंग ऑफ द ई फॉर्म DIR3 KYC अंडर रूल 12A. KYC of director, as it mentioned here, all the director of the company shall file this form on or before 30th September every year. कंपनी के डायरेक्टर्स को on or before 30th September every year ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है. On or before 30th September they have to file the DIR3 KYC. तो DIR3 KYC every year फाइल होगा, एवरी डायरेक्टर के लिए फाइल होगा, इसकी ड्यू डेट होगी 30th September. सो अब चाहे कंपनी वर्किंग है नॉन वर्किंग है, बट अगर आपके पास दिन नंबर है, अगर किसी पर्सन के पास दिन नंबर है तो उसको अपना DIR3 KYC फाइल करना मैंडेटरी है. और DIR3 KYC फाइल करने की जो ड्यू डेट है दैट इज 30th September. So these are the 7 compliances of the second quarter, July to September. And total अगर if we will say from April to September, these are the total 11 compliances which a company is required to do. So ये 11 compliances एक कंपनी को अप्रैल टू सितंबर में करने मैंडेटरी है. अब बात करते हैं क्वार्टर नंबर 3, अक्टूबर टू दिसंबर. अब लास्ट क्वार्टर में हमने डायरेक्टर रिपोर्ट्स बना ली, फाइनेंशियल्स बना लिए, ऑडिटर रिपोर्ट बना ली, जनरल मीटिंग का नोटिस सर्कुलेट कर दिया, जनरल मीटिंग होल्ड कर दी. तो इन सभी के बाद नेक्स्ट कंप्लायंस आता है फाइलिंग ऑफ द एनुअल फॉर्म्स, जो फॉल करेंगे हमारे क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर में. तो हमारे फाइलिंग ऑफ द एनुअल फॉर्म्स अक्टूबर टू दिसंबर में फॉल करेंगे.
अक्टूबर में बोलते हैं फर्स्ट, सेक्शन 137 ई फॉर्म एओसी फॉर्म. Company is required to file its balance sheet along with the statement of profit and loss account, cash flow statement, director report, auditor report in this form within 30 days of holding of the general meeting. Generally क्या होता है, इंडिया में 99% कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन द 30th September. So this AOC for always mostly fall under the month of the October. So that's why I kept it in the third quarter. जनरली ऐसा नहीं कि थर्ड क्वार्टर में ही फाइल होगा, ये फॉर्म फाइल होगा विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम. अगर आपने एजीएम ही मई मंथ में कर दी तो ये फर्स्ट क्वार्टर में जून में ही फाइल करना पड़ेगा. पर जो जनरल टेंडेंसी है इंडिया की, जो जनरल टेंडेंसी है इंडियन कंपनीज की, देयर टेंडेंसी इज दैट दे विल होल्ड देयर जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ऑन द 30th September. So if they will hold the annual general meeting on the 30th September, accordingly till 30th October, accordingly in the month of October, they have to file this form AOC form. So third quarter का पहला compliances है preparation and filing of AOC form. Next compliance is annual form is again section 92, that is MGT 7. Every company will file its annual return within 60 days of holding of the annual general meeting. So annual return will be for the period of the 1st April to 31st March. So annual return is required to file within 60 days of the holding of AGM. As I discussed in the last compliance number 12, that is for the AOC 4, we have discussed in India, mostly 99% of the companies hold their annual general meeting on the 30th September. So accordingly, this form will fall under in the month of May, month of November. That's why I kept it in the second quarter. Certification of the annual return, that is MGT 8. If a private company having a share capital of 10 crore or more, or turnover or 50 crore or more, then their annual return, their MGT 8 should be certified by a practicing company secretary. So अगर आपकी private company इस limit में fall करती है तो आपको अपनी MGT 8 लेना पड़ेगा, एक certification of annual return from the practicing company secretary. So these are the three compliances for the third quarter, that is October to December. So total 14 ऐसे compliances है जो हमें first quarter to third quarter, that is from the 1st April to 31st December आपको करने हैं. अब आते हैं January to March. As I mentioned there is no mandatory compliances for this quarter. Finally there is some quarter जब हमें कोई forms या कोई returns file नहीं करनी है. January month में कोई भी January to March में Companies Act के according private companies की कोई भी due date fall नहीं करती, चाहे वो MSME की हो, DPT की हो, AOC4 की हो, MGT 7 की हो. डेफिनेटली कंपनीज कुछ डिले कर देती है फाइलिंग करने में, तो उन्हें करना पड़ेगा जनवरी टू मार्च में भी. बट अगर हम ड्यू डेट्स की बात करते हैं, प्रॉपर कंप्लाइड कंपनी की बात करते हैं, तो जनवरी टू मार्च में देयर इज नो सच ड्यू डेट्स एंड नो सच कंप्लायंसेस आर मैंडेटरी. अब आते हैं हम कुछ ऐसे कंप्लायंसेस की बात करते हैं जो क्वार्टरली बेस्ड कंप्लायंसेस नहीं है बट विच आर मैंडेटरी टू डू. Compliance number 15, board meeting. Every board meeting should be held as per section 173 on Secretarial Standard 1. अगर कोई भी कंपनी इंडिया में कोई भी कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है तो उन्हें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, उन्हें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 फॉलो करना मैंडेटरी है. So for the board meeting you have to go through section 773 along with Secretarial Standard 1. As I mentioned here, every company shall hold a minimum number of 4 meetings of the board of directors every year in such a manner that maximum gap between the two board meetings should not be more than 120 days. Every company is required to hold at least 4 board meetings in a year. Small companies की अभी बात नहीं करते हैं. Small companies के केस में क्या होता है? Small companies are required to hold at least 2 board meetings in a calendar year, और minimum gap between both the board meetings should be 90 days. तो स्मॉल बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट स्मॉल कंपनीज के कंसेप्ट अलग है. बट हम बात कर रहे हैं नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. नॉन स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड के कंपनीज के केस में एवरी ईयर यू रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग. नंबर 1, देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द होल्डिंग ऑफ द क्वार्टरली मीटिंग. आपको हर क्वार्टर में मीटिंग करना है ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. सो इट इज nowhere mentioned that you have to hold a meeting in quarter, no such condition, but you have to hold at least 4 board meeting in the financial year and maximum gap between 2 board meeting can be 120 days.
So this compliance is required to be done. Maintenance of the statutory register. As per Companies Act or as per different section of the Companies Act, companies are required to maintain some statutory registers like register of directors, register of director shareholding, register of member, register of transfer, register of related party transaction. These are the mandatory register required to be prepared by the company. So जब भी companies में कोई ऐसा transaction करता है जो इनमें से किसी register को impact करता है या इनमें से किसी register को effect करता है, वो transaction इस register में update करना पड़ता है. But these are the mandatory register. ये register हर company को maintain करने mandatory है. Next आता है 17th compliance is appointment of the auditor. The auditor will be appointed for the 5 year and ADT1 will be filed for 5 year of appointment within 15 days of annual general meeting. जो ADT1 फाइल होता है, ADT1 कंपनी का 5 इयर्स के लिए फाइल होता है. ऑडिटर एक बार अपॉइंट होता है तो वो 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, बट एवरी 5 ईयर में एटलीस्ट आपको 5 ईयर बाद ये फॉर्म फाइल करना है. तो ADT1 जो फाइल होता है वो 15 डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल मीटिंग में फाइल होता है. These are the 17 compliances. As I mentioned, there above are the 17 compliances are mandatory annual compliance for all the private companies. Except these 17 compliances, there may be n number of we can say event-based compliances could be there. But these are the mandatory 7 compliances which are required to be followed by each and every company. Whether you are a one-person company, whether you are a small private company, whether you are a non-small private company, whether you are a public company or whether you are a listed company, these are the mandatory 7 compliances which all the companies are required to be complied with, which all the companies are required to be do. अगर आप ये 17 compliances कर देते तो you can say कि at least you have complied with all the bare minimum compliances under the Companies Act. So from my side, the presentation is end here. Now I will take up some questions which are mentioned under the chat box. Where there is no change in the interest in the other entities, still MBP1 is required from all the director? Question number, very good question. Even there is any change or no change, but every year in the first board meeting, you are required to accept MBP1 from the directors. So that's why I said कि चाहे कंपनी वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, चाहे डायरेक्टर के इंटरेस्ट में चेंज आया है चाहे डायरेक्टर के इंटरेस्ट में चेंज नहीं आया, but every year this MBP1 is required to be filed by the taken by the company from the directors. Second one is please share a presentation to the lecture annual comment. Definitely I will share this presentation with the organizers. Whether MBP1 will be accessible to the auditor from MCA portal. MBP1 आपको MC के पोर्टल से accessible नहीं होगा because MBP1 is the internal document of the company. But as an auditor, you are allowed to check that document. You are allowed to audit that document. So it will be not available on the MCA website, but you can ask such document from the company at the time of audit. Next question, is it obligatory to file MSME1 by a company even there is no dues to the MSME exceeding 6 months? See sir, you said कि no due exceeding 6 months. I am saying any due exceed 45 days, you have to file the MSME1. अगर आपने 45 days के बाद पेमेंट किया है किसी वेंडर को या 45 days के बाद भी अभी तक नहीं किया तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है. तो 6 month का यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है. Next, how much loan company can take from director or their relatives? There is no restriction for from the limit of the loan from director or relative. Only one condition is that whenever a company will take loan from the director or their relative, company will take a declaration from that the loan which they are giving to the company is their own fund, not borrowed fund. An auditor should check that declaration because at the time of audit, अगर आपको लगता है कि company ने director से loan लिया है, but declaration नहीं ली, it will be considered as a non-compliance of section 73, or it is your responsibility as an auditor to report this non-compliance in the auditor report as well as CARO. Someone said, who are the relatives for the purpose of Companies Act? Sir, the definition of the relative is given under section 2, clause 76. जिसमें थोड़े से ट्रांजेक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, or you can say member of the HUF. These are the some relatives under Companies Act. Next question. The AGM for closely held public company for the financial year ended 2016 onward not taken. Now company wants to do what to do. Company is showing active on the MCA portal.
So the thing is that अगर आपने AGM नहीं की है 2016 की और उसके बाद की ईयर्स की, अब आप करंट डेट में अगर AGM करेंगे तो आप AGM करंट डेट में कर सकते हैं, आप उसकी फाइलिंग्स करिए प्रॉपर, देन आप कंपाउंडिंग ऑफ AGM, बिकॉज आपने AGM डिले किया, आपने सेक्शन 96 का नॉन कंप्लायंस किया है, तो सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, तो सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर के पास। Next question, whether MGT9 has to be prepared or attached to the director report. MGT9 has been removed from the Companies Act. From the financial year ended 31st March 2021, there is no requirement of the preparation of the MGT9. Next question, how to add new directors in the existing company, not being additional director without limit of any tenure. देखो डायरेक्टर अपॉइंट करना है, आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना चाहते तो आप सेक्शन 153 फॉलो कीजिए, आप बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कीजिए और जनरल मीटिंग कॉल कीजिए, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आप डायरेक्टर को अपॉइंट कीजिए एज अ नॉर्मल डायरेक्टर, तो देयर विल बी नो इशू ऑफ द टेन्योर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, कैन डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सेड प्रमोटर इज नाइदर शेयर होल्डर नॉट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एग्जम्प्टेड। प्रमोटर से लोन लेना अलाउड नहीं है, जैसा मैंने बोला डायरेक्टर से लोन लेना अलाउड है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लेना अलाउड है, शेयर होल्डर से लेना अलाउड है, प्रमोटर से लोन लेना अलाउड नहीं है। प्रमोटर से आप लोन लेते हो तो वो डिपॉजिट माना जाएगा, डिपॉजिट माना जाएगा तो मतलब नॉन कंप्लायंस हो जाएगा कंपनीज एक्ट का, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑडिटर रिपोर्ट को एज वेल एज कारो को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, DPT3 फाइल एज अ नील फॉर्म फ्रॉम डायरेक्टर वेयर एज अ 5 year or 3 year the auditor tender his unwillingness to AGM to continue new auditor appointment whether ADT is to be filed. Okay, अगर ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाहता और रेजिग्नेशन भी नहीं देना चाहता तो उस केस में आपको रिमूवल ऑफ ऑडिटर करना पड़ेगा विद द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। बट ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाहता और ऑडिटर रेजिग्नेशन देना चाहता तो वो ADT3 फाइल कर देगा, ऑडिटर विल देन हिमसेल्फ विल फाइल द ADT3 and then you can appoint the auditor in the casual vacancy. Okay, one more question is there. For incorporation of the company, more than 7 subscriber, then in subscriber sheet the subscriber has to write on written their names, address, occupation or computer typing is to be considered as the time of, see there are two things, electronic MOA और physical MOA। इलेक्ट्रॉनिक MOA उस केस में लगता है जहां आपके अप टू 7 सब्सक्राइबर होते हैं, 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर आया तो आपको प्रिंट आउट लेके हैंड रिटन सब्सक्राइबर शीट्स को फिल करना पड़ेगा। इस DPT3 नीड टू फाइल फॉर नो डिपॉजिट, अगर कंपनी में 31 मार्च को कोई लोन नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है, कोई एडवांस नहीं है तो DPT3 आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। So I have taken, Salimji, I have taken all the question which was there in the chat box and I have completed my presentation. So thank you so much everyone for the patience listening and participating by asking the query. Thank you so much. Now it's you and Salimji. I really thank CS Devesh Goyal on behalf of the Committee on Economic Commercial Law and Economic Advisory. Our Chairman Sir Shri CA Dr. Rajkumar Adukia, Vice Chairman Sir Hansras Chok. We are very grateful to faculties who come here, who not only give the latest developments, not only refresh the knowledge, but also, put in their time by preparing the presentations and sending it across, which the participants are really finding very interesting. And, we are again grateful for that. So I thank all the participants who have, attended the webinar today, as well as I thank the guests, the speakers, the entire CL and EA team for, taking this towards the logical end and, benefiting the fraternity from the same. Thank you so much. Sir. Thank you so much. Thank you, everyone.